My colleague in India Today's executive editor, Javed Ansari, has been able to access the Anti-Corruption Bureau's preliminary investigation report into charges being leveled against Gopal Rai, the former transport minister. Remember, Gopal Rai is accused of favouring one particular private company. The Anti-Corruption Bureau, in its preliminary findings, says that all the norms which were supposed to have been followed were violated. So sit back and watch these 11 grave violations that have emerged from the preliminary investigation report put together by the Delhi Police's Anti-Corruption Bureau. This is an India Today exclusive, a story that's setting the news agenda and is not available with any other news network. Did Arvind Kejriwal's top minister Gopal Rai violate rules to implement a premium bus service in Delhi? And was it all done to favour one Gurgaon-based company? Gopal Rai was questioned about the scheme by the anti-corruption branch on Tuesday. India Today has exclusively accessed the initial investigation report prepared by the ACB, and it points to at least 11 glaring violations. First, clauses of the Motor Vehicle Act of 1998 were misrepresented. Clause M and N of subsection 3 of section 66 of the Act refer to exceptions made under the Motor Vehicle Act in cases of emergency like earthquake or flood. The emergency clauses, however, are not applicable in case of a premium bus service. What's more is that the notification for the scheme was issued in the Lieutenant Governor's name. But the LG was not kept in the loop, and the notification did not have his approval. The cabinet note for the scheme was in fact prepared by Gopal Rai himself. In reality, all such notes are prepared by department secretaries, in this case, the Transport Department Secretary. The Anti-Corruption Bureau goes on to say that Rai was not empowered by law to issue the notification, and the entire scheme was approved and notified illegally. पॉलिसी बनी है, पॉलिसी में टेंडर है ही नहीं, ओपन फॉर ऑल है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इसमें अपना जो है जिसके पास 50 से अधिक बसें हैं वो इस पॉलिसी में आ सकता है, टेंडर तो प्रक्रिया है ही नहीं इसमें। What's even more startling is that Gopal Rai and the Aam Aadmi Party government did not consult all stakeholders involved. All the bus operators except one, which ultimately got the contract, opposed the scheme, citing violations of the Motor Vehicle Act of 1988. There was no limit to the number of buses and routes, and the bus operator was allowed to determine the fare. Even the draft proposal for the scheme was not put out in the public domain, and no inputs from the public were sought. The Delhi Police too wasn't consulted on the viability of the scheme. The Department of Finance and Law Department too were kept out of the loop. The cabinet note on the bus service was borrowed from the Delhi Dialogue Commission's proposal. The Transport Department had red-flagged bus scheme provisions earlier too, but these concerns were not addressed. The notification for the premium bus service was issued without the High Court's approval. When India Today sought answers from the Delhi Chief Minister on these glaring violations, this is how he responded. The Anti-Corruption Bureau's initial investigation report points to 11 violations with regard to the Aam Aadmi Party's implementation of the Premier Bus Service scheme. Mr. Gopal Rai was not authorized, yet he decided to notify it without keeping the LG or the other concerned departments of the government in the loop. The question is, why was the Kejriwal government in such a hurry? Was this done to favour a particular promoter? This is Javed Ansari in New Delhi for India Today. I want to go across now live and exclusive to M.K. Meena. He's the Special Commissioner in charge of the Anti-Corruption Bureau of the Delhi Police. He's joining us on this broadcast. He's the man who's leading the probe into the case against Gopal Rai. Welcome, Mr. Meena. You've got all the documents. You've had an opportunity to put together your preliminary investigation report, which we just aired on India Today. I want to understand from you, how compelling do you believe the case against Gopal Rai to be? Do you think that these are procedural irregularities, or do you believe that there's something more sinister that's up? हमें कंप्लेंट मिली है, उस कंप्लेंट के तहत हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से भी इंक्वायरी की थी,
और उसके तहत हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और इसमें जो एलिगेशंस हैं, बेसिक एलिगेशंस ये हैं कि जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके प्रोविजंस का वायलेशन किया है। इसके अलावा ऑनरेबल एलजी की अप्रूवल नहीं ली है, जबकि उसमें लिखा गया है कि ऑनरेबल एलजी की अप्रूवल है। और जो एलिगेशंस और भी हैं उसमें जो कंप्लेनेंट ने लगाए हैं, वो एलिगेशंस ये हैं कि जो एक कंपनी शटल कंपनी है उसके मिलके ये सारा काम किया है, नोटिफिकेशन इशू किया है। और इस तरह जो कम्प्लीटली इससे गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है, लॉस है, मतलब उससे फाइनेंशियल लॉस भी है गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी लाने से। तो इस तरह के जो एलिगेशंस हैं उसके हम हर पहलू पे काम कर रहे हैं। हमने फाइल्स भी मंगवाई हैं, फाइल्स को एग्जामिन कर रहे हैं, पेपर्स को, और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको एग्जामिन करना शुरू कर दिया है। तो उसमें अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें मैं इसलिए अभी फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहूँगा। Tell me, Mr. Meena, do you believe that these are just policies and norms which haven't been followed in the drafting of the new policy? Or do you believe that this could possibly potentially come under the purview of the Prevention of Corruption Act? Do you believe that this is a cognizable offence that's been committed deliberately? नहीं, अभी क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए हैं कंप्लेनेंट में, वो कंप्लेनेंट ने एलिगेशन इसी तरह के लगाए हैं जो कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत कवर होते हैं, जो एलिगेशंस हैं। क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो इस चीज़ पे मैं अभी से कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है एक पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है। इस तरह के एलिगेशंस हैं कंप्लेनेंट के, तो हम सारे पहलू देख रहे हैं उस पर। पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे भी हैं और क्वेश्चनिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है, और जो जितने भी उससे कंसर्न लोग हैं सारे कंसर्न लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद ही हम कंक्लूजन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी में क्या है। Now, I was speaking to a person in the Aam Aadmi Party involved in drafting this policy. He said the idea is to liberalize the transport sector, to end the permit quota Raj system, which is why no caps have been fixed on routes, no caps have been fixed on number of buses or the number of times they can ply or the fees that can be charged, the per ticket price that can be charged. They're saying that this is done with the intent of opening up this sector. However, your investigation report says that you believe that this is unregulated, that there can potentially be more problems as a consequence of this. You refer to what happened with the Blue Line buses. So do you think that the current policy actually potentially creates law and order problems from a policing perspective, Mr. Meena? इसमें जो वैसे इस तरह की जो पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी के तहत सारे पहलू उसमें कवर होते हैं। पब्लिक से भी कमेंट्स लिए जाते हैं, सारे स्टेक होल्डर से भी पूछा जाता है, तो दिल्ली पुलिस से भी पूछा जाता है। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट से भी राय ली जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस तरह के एलिगेशंस भी हैं और हम उसी पॉइंट पे इंक्वायरी कर रहे हैं। इस तरह अगर कोई करते रहेंगे, पॉलिसी एक होनी चाहिए पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक की बेनिफिट के लिए। लेकिन पॉलिसी अगर इस तरह की बनाओगे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट करना है या उससे अनरेगुलेटेड कोई चीज़ हो जाती है, तो पॉलिसी खिलाफ है, पब्लिक के भी खिलाफ है और पॉलिसी के खिलाफ है। और जितनी जो अपनी पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी इस तरह की बनानी चाहिए जिससे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है तो उससे मैसेज गलत जाता है। तो हम ये सारे पहलू जो हैं, जो जिस तरह से पॉलिसी बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है और जिस तरह से उसमें एलिगेशंस आए हैं, उस एलिगेशंस में हम एक पॉइंट वाइज हम Those are very serious charges. Those are very serious charges being leveled by the man leading the probe into the case against Gopal Rai, the under fire AAP minister. Tell me, Mr. Meena, is there a deadline for when this charge sheet will be filed? Because at the end of the day, it wasn't only Gopal Rai who took this decision. The cabinet of the AAP government in Delhi signed off on this. So does that then mean, Mr. Meena, that possibly Chief Minister Arvind Kejriwal could be called in for questioning by you as well? नहीं, क्योंकि इंक्वायरी का मामला है और इस तरह की इंक्वायरी के बारे में हम कमेंट्स नहीं करना चाहते किस से पूछताछ होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इसमें कंसर्न लोग हैं सबको बुलाया जाएगा, सबसे उनका व्यू पॉइंट लिया जाएगा, उन जो एलिगेशंस हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद ही इसमें कंक्लूजन पहुंचेंगे, क्योंकि बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं
प्रिलिमिनरी ये मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया था इस पॉलिसी के लिए, और उसमें ये क्लियर कट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि जो इसमें काफ़ी कुछ ऑब्जेक्शन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशियल काफ़ी ऑब्जेक्शंस आए हैं, हम उनको भी एग्जामिन कर रहे हैं। One final question, Mr. Meena, before I let you go. You know, one of the most startling things in the investigation report that your team has put together is the fact that you believe that the Motor Vehicle Act of 1988 was not followed. And I want to explain this to our viewers, because the Motor Vehicle Act of 1988 has a clause under 66(3) subclause M and N, which essentially says that in case of a natural calamity, an earthquake, flooding, the government can leave aside prescribed norms and go in for purchase or make changes to the public transport system which don't ordinarily follow norms. Now, do you find it startling, Mr. Meena, that the emergency clause has been invoked despite the fact that there is no emergency? Koi apada nahi hai, there's no earthquake, there's no flood, and yet the emergency clause has been invoked. That is the basis for this policy decision by the AAP government. नहीं, अभी इंक्वायरी है, इसलिए मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एलिगेशंस में भी है। इसमें इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद हम सबके कमेंट्स लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो क्या है। Okay, I'm going to leave it there. M.K. Meena, Special Commissioner in the Delhi Anti-Corruption Branch of the Delhi Police. He's coming out, speaking about his investigation, saying that Kejriwal could possibly be called in for questioning. All those who signed off on this decision by the AAP government could be called in, including the Chief Minister. He's also saying that prima facie the investigation shows that there are grave and very serious irregularities in this. So what does the AAP government have to say about the 11 irregularities that have been listed out by the Anti-Corruption Bureau? I want to go across now and get you what Manish Sisodia, Arvind Kejriwal's right-hand man, the Deputy Chief Minister of the AAP government in Delhi, had to say about these 11 charges. We asked him these 11 questions. Here is Manish Sisodia in an exclusive conversation with my colleague Ankit Tyagi. एलजी के नाम पर आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी उस पर साइन कर देते हैं, कहते हैं कि एलजी ने अप्रूव कर दिया। एलजी साहब से कह रहे हैं मेरे पास फाइल ही नहीं है, अप्रूव कैसे करा? एसीबी कह रही है फ्रॉड है ये। तो देखिए, आप तो पत्रकार हैं, एक चैनल चल रहा है आपका जिसपे दिखा रहे हैं, और एक जाना माना चैनल है। मुझे लगता है इतनी बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को भी ठीक से शेयर करनी चाहिए जनता के साथ में, मुझसे पूछने से पहले। इस देश में राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनके नाम पे काम होता है। चुनी हुई सरकारें या जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनके नाम पे काम करती हैं। राष्ट्रपति के पास फाइल नहीं जाती है, गवर्नर्स के पास फाइल नहीं जाती है, एलजी साहब के पास फाइल नहीं जाएगी। एक मिनट मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक बार बहुत समय पहले रेडियो स्टेशन में काम करता था, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में। वहाँ पे ना चेक मिलता था हमें, हम एक अनाउंसमेंट की ड्यूटी करते थे, वहाँ चेक मिलता था 150 रुपए का। उस 150 रुपए के चेक पे भी लिखा रहता है कृत्य राष्ट्रपति भारत। तो वो फॉर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन होता है। तो एक मिनट, वो अकाउंटेंट जो है ना, वो हर एक चेक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजता। तो ये बेसिक नॉर्म है सरकार का कि एलजी के नाम पर, गवर्नर के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। होम मिनिस्ट्री की फाइलें मानी जाती हैं। ये जो सारी फाइलें आती हैं ना, प्रेसिडेंट साइन नहीं करते। आपकी बात मैंने बिल्कुल मानी। उस जो आपको चेक मिलता था, उसका जो कैशियर था, उसमें और दिल्ली की सरकार में काफी फर्क है। नहीं, दिल्ली के रूल्स में काफी फर्क है। आपको वैसे भी आपकी सारी फाइलें आपको एलजी के पास भेजनी पड़ती हैं। ये कौन से रूल की बात कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, आप पत्रकार हैं। मैं थोड़ा सा बता दीजिए कौन से रूल की बात कर रहे हो? एलजी साहब ने खुद एसीबी को लिखकर ये जताया है कि मेरे पास कोई फाइल नहीं भेजी गई, तो कैसे इन्होंने मेरे नाम पर नोटिफाई कर दिया। इस बारे में जो एसीबी है वो जांच करे। सबसे पहली बात, एसीबी कह रही है ये तो फ्रॉड का मामला बनता है आपके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के बारे में। देखिए, एलजी साहब के कहने से बात नहीं बनेगी। आपने कहा रूल्स हैं दिल्ली के, मैं आपसे कह रहा हूँ कौन सा रूल है दिल्ली का जो ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट जो कि संविधान के हिसाब से दिल्ली विधानसभा को सारी फाइल आपको भेजनी पड़ती है ना के लिए। किसने कहा? कहाँ लिखा है, कौन सी क्लॉज में लिखा है? ये आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके अपने चैनल पे चला दोगे, फिर बोलोगे कि ऐसे होगा। ऐसे थोड़ी होगा। मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। रूल में लिखा हुआ बताना पड़ेगा। कौन से कानून में, कौन से रूल में लिखा हुआ है कि सारी फाइलें वहां भेजनी पड़ेंगी? दिल्ली सरकार के नहीं, झगड़ा नहीं है। संविधान के 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के लैंड,
लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान से ऊपर ना एलजी है, ना मैं हूं, ना आपका चैनल है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है 3 सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, बाकी सारे सब्जेक्ट दिल्ली असेंबली को ट्रांसफर्ड है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे चुनी हुई सरकार चलाएगी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को। बिल्कुल। मैं आपके दूसरी वायलेशन के आपके साथ ध्यान दिलाता हूं। आपकी जो एसीबी की रिपोर्ट है वो कहती है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो बेस्ड है क्लॉज M और N सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये जो क्लॉज हैं ये मिसरिप्रेजेंट करे गए हैं आपके नोटिफिकेशन में। वो कहते हैं कि ये जो क्लॉज हैं, ये एग्जेम्पशन जो मिला हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर है, यानी कि फ्लड, अर्थक्वेक या किसी अदर नेचुरल कैलामिटी के टाइम में। उस पर लिखा हुआ है एक मिनट जी, उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस लिखा हुआ है, पर क्या उसमें लिखा हुआ है कि फ्लड, अर्थक्वेक और इनके नाम पे बस? ये मोटर व्हीकल एक्ट में बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, एनी अदर कैलामिटी। तो वो कह रहे हैं कि आपका ये जो ऐप बेस्ड बस सर्विस है, ये तो इसमें फॉलो नहीं करता, इसमें ऐसी इमरजेंसी क्या है? आपने इसको, इसका मतलब मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इस मोटर व्हीकल एक्ट को। एसीबी का ये चार्ज है आपके ऊपर। हाँ, तो आप फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप तो पत्रकार हैं, एक बड़े चैनल में पत्रकार हैं, आप जरा सोचिए दिल्ली में ये इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना सब कुछ लोग तरह तरह कर रहे हैं पॉल्यूशन के नाम पे। जब आप खुद अपने चैनल दिखाते हो कितना पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है। क्या इस कंडीशन से निपटने के लिए हम 2 साल की कोई स्कीम बनाए कि भैया 2 साल बाद कोई स्कीम आ जाएगी? वो भी आएंगी, लॉन्ग टर्म स्कीम्स भी बनेंगी, लेकिन क्या ये इमरजेंसी नहीं है कि पॉल्यूशन से बचने के लिए तुरंत हमें कुछ ऐसी स्कीम उठानी चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनहेंस हो? इसमें करप्शन कहाँ है? हमने माना कि पॉल्यूशन किसको लेके दिल्ली में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें करप्शन कहां से आ गया? हमने एक बार भी हम नहीं कह रहे कि इसमें करप्शन है, ना ही हम इसको स्कैम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये वायलेशन हुई है, जो एसीबी की रिपोर्ट में ये जाहिर हुई है कि ये वायलेशन हुई है। उसके बाद एसीबी इन पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पे अगर आपने किसी को फेवर करा, पैसा दिया, नहीं दिया, वो इन्वेस्टिगेशन का है। हम उसमें नहीं कह रहे कि इसमें कुछ स्कैम है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं वायलेशन है, उसका आप जवाब दे रहे हैं। तीसरा जो वायलेशन जो एसीबी की रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 5 सितंबर 2013 का, जिसमें कहा गया है कि जो भी नई स्कीम इंट्रोड्यूस होगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा अपार्ट फ्रॉम क्लस्टर स्कीम, वो हाई कोर्ट के सामने एक बार लानी पड़ेगी आपको इंप्लीमेंटेशन से पहले। इशूइंग दिस नोटिफिकेशन ऑन जो प्रीमियम बस सर्विस है विदाउट चेकिंग विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को आपने नहीं बताया, ये हाई कोर्ट की अवमानना है। यहां भी आप गलत लिख रहे हैं। मैंने लिखा, एसीबी लिख रही है। हाँ, आपके जो भी सोर्सेज हैं, ये क्लस्टर स्कीम के लिए है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई क्लस्टर स्कीम और लाओगे तो आप हाई कोर्ट से पूछोगे। दिस इज नॉट क्लस्टर स्कीम। क्लस्टर स्कीम के अलावा जो भी हम कर रहे हैं उस क्लस्टर स्कीम पे हम लेके आएंगे तो हमें हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा। ये सीधा सीधा है, फिर जबरदस्ती उसको इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि ये करप्शन हो गया। चलिए, चौथा जो वायलेशन है जो एसीबी की रिपोर्ट कहती है आपके खिलाफ, जो चौथा वायलेशन है वो है कि एक अथॉरिटी आपने बनाई थी, डीडीसी, दिल्ली डायलॉग कमीशन। गोपाल राय जी ने ये नोट प्रिपेयर किया और इन्होंने आशीष खेतान जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ड्राफ्ट में जो रिकमेंडेशन भेजी थी पूरे का पूरा उसको वैसे का वैसा उठाकर अपने ड्राफ्ट नोट में इन्होंने रख दिया। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खुद के, उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसके वो मिनिस्टर थे, उसने कुछ इसमें रेड फ्लैग्स इसमें दिखाया। उन्होंने कहा कि ये कुछ चीजें हैं जो शायद मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं चल पाएंगी, उनको भी उन्होंने नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा आशीष खेतान ने भेजा था उसको वैसे का वैसा कैबिनेट के आगे बढ़ा दिया। वो ये कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है आशीष खेतान का इसमें कुछ स्पेशल इंटरेस्ट हो, जिसको गोपाल राय बिल्कुल अपना सीधे चला रहे हैं। देखिए, डीडीसी आशीष खेतान नहीं है। डीडीसी एक बहुत अलग तरह की संस्था है जो लोगों से बात करती है, संवाद करती है, एक्सपर्ट्स हैं उसमें, और जनता से बात करती है, बहुत अलग अलग तरीके, पब्लिक मीटिंग्स में जाकर बात करती है। डीडीसी का काम करने का एक मैंडेट है। सरकार कोई भी नई चीज लाए, वो डीडीसी अगर तैयार करती है तो वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन से, अलग अलग उसके तरीके हैं, समय समय पे कभी ये वाला तरीका अपनाती है, कभी वो वाला तरीका अपनाती है, कोई शॉर्ट नहीं, लेकिन बहुत तरीके हैं। ऐसे में डीडीसी ने अगर कुछ तैयार किया तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। कल मैं जेटली साहब के साथ में था फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में, उन्होंने मुझे कहा कि मनीष ये स्कीम बहुत शानदार है। उनके बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे थे, एक मिनट, उन्होंने कहा कि ये स्कीम इतनी जरूरी है कि देश के सारे राज्यों को इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसको अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने आपकी उस ऐप बेस्ड सर्विस नोटिफिकेशन की तारीफ करी, बिल्कुल करी, अभी एसीबी जांच कर, और मेरे से 1-to-1 में नहीं की। वहां देश के बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने की, और उनके सामने उसकी तारीफ करके कहा कि ये तो बाकी राज्यों में होनी चाहिए। दिस इज द फ्यूचर सॉल्यूशन ऑफ आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
पांचवा जो वायलेशन जो एसीबी की रिपोर्ट कहती है वो ये है कि गोपाल राय जो फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में अभी कुछ दिन पहले तक ही, उन्होंने जो नॉर्म्स होते हैं वो तोड़े। क्या नॉर्म्स होते हैं? वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म है उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं कैबिनेट नोट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने। मंत्री जी ने ना तो अपने अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से पूछा, मंत्री जी ने खुद ही फटाफट आशीष इस्लाम के कहने पर बनाई और आगे आप लोग प्रेजेंट कर दिया। देखिए, मेरा ये कहना है, जो लोग भी ये कह रहे हैं या तो वो जानबूझ के कंफ्यूजन फैला रहे हैं या उनको बेसिक नॉलेज तक नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग्स में देश भर में, राज्य में भी और केंद्र में भी टेबल एजेंडा आते हैं, और जब टेबल एजेंडा आता है तो मिनिस्टर ही पेश करते हैं, वो उसको फिर ऑफिसर्स नहीं पेश करते। टेबल एजेंडा लगभग हर एक राज्य में, देश में जहां भी जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है कोई ना कोई टेबल एजेंडा आता है। और ये जब मैंने कहा कि पॉल्यूशन पे इतना एम्बिशियस एजेंडा है, इतनी, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें कहां से करप्शन हो गया? इसमें क्या भ्रष्टाचार कर दिया? क्या स्कैम कर दिया? अगर टेबल एजेंडा लाना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो मिनिस्टर्स की है ना, कैबिनेट के तो मेंबर हैं, वो ऑफिसर्स नहीं है। कैबिनेट के मेंबर तो मिनिस्टर हैं। तो मिनिस्टर अगर टेबल एजेंडा लेके आते हैं तो टेबल एजेंडा तो मिनिस्टर की तैयार करने दें। Okay, you've heard from the Aam Aadmi Party, you've heard from the man leading the probe against Kejriwal's minister. Joining us now is Raghav Chadha, spokesperson for the Aam Aadmi Party. With us also is Kiran Walia, former health minister in the Congress government under Sheila Dikshit. Professor Kamal Mitra Chinoy is an AAP-leaning activist of sorts. He's joining us on this broadcast as well. I want to go across first for an independent, reasonably independent perspective, even though you lean towards the AAP. You've heard what... Incidentally, I have not been leaning towards the AAP for a while now. Okay. Quite some so time. You've heard what Manish Sisodia says in the defense of Gopal Rai. You've also heard what A.K. Meena says. He's convinced he has a very compelling case pointing out specific irregularities. Do you think Gopal Rai has erred grievously? Number one, I think the problem started with the assumption in the Delhi government from the beginning that they should have the rights of a state. But Delhi is neither union territory or a state. Now, Manish Sisodia, in defending AAP, said that transport is a state subject. It is, but Delhi is not a state. Okay, so that's the first problem. Second problem is that Delhi Dialogue Commission is very useful, but you can't use a draft from the DDC as a vehicle, as an implement for a new set of laws. So these mistakes occurred because they didn't realize that they're dealing with a big bureaucracy, since after all transport sector is a lucrative sector, and also they want to see how transport is working because of the great congestion of traffic. So there were a number of red flags up. They didn't realize this. So I don't think there is any attempt, since everything is so open, to work against the law. But there is a rush to get the support of people for a new scheme, and in this rush they took shortcuts. You're saying that they were rushing, but the problem seemed to be far deeper than that. And I want to bring in Kiran Walia on this, because the most serious charge seems to be that provisions of the Motor Vehicle Act which pertain to natural calamities like earthquakes, floods, those were invoked. You are changing policy forever by bringing in new operators, invoking which is a clause meant for public emergencies, a clause which has absolutely nothing to do with normal life. But that's because they're in a hurry. Professor Chinoy says it shows that they were in a rush, but they wanted to do the right thing. Do you agree, or do you believe that this is actually a very grievous error which reeks of some sinister design? Kiran Walia. Well, I think that whatever you may say, it is the officers mainly who do many things, but a serious issue like this, the minister is also supervising and seeing, and one of the allegations that I've been reading in the papers is that the whole tender was so designed as to favor one company. Now, if there is a doubt that's been raised... No, but Kiran Walia, I must correct you on 2 points. Firstly, there was no tender. The whole problem here seems to be that there was no tender. The policy was drafted in a way that only one company could apply. The other companies backed out. There was a meeting. The minutes of the meeting say the other operators opposed what was being suggested by the Kejriwal government. There was no tender. Only one company applied. Excuse me, then it is a more grievous issue, because then
You cannot do things like this. There are procedures, laid down procedures I've not heard of. We in our ministry also have been, getting involved in all these kind of exercises and processes. It is a gross mistake, and what makes the whole thing more strange is the fact that Mr. Gopal Rai is informing from the hospital is not capable of handling the transport ministry. Now, if he is not capable of handling the transport ministry, he should not be capable of handling other ministries. Why this option, opt out of transport ministry in particular because of the spot in it is caught itself. Secondly, if he gets tainted, then he's tainted for the rest of the ministries also. So you cannot have a minister who is tainted. So somehow the way the things are happening and the way that he's trying to get out of the whole thing, that whatever is the issue, it has to be probed thoroughly. The important point you make, Professor Chinoy, just accompany me because Kiran Walia has touched upon a very significant point that I was hoping to make. See this, Professor Chinoy, because in a moment from now, I'll show you how Gopal Rai says he's unfit for the transport ministry. He's quit the transport ministry, not because anyone in the Kejriwal government has said he's guilty of any wrongdoing, procedural or pecuniary. They're saying he's quit because he's not well. But he still continues to be your employment minister, the development minister, the labor minister, the general administration department, the irrigation and flood control department. 5 significant departments still continue to come under him. That's very awkward. How can you be unfit, as Kiran Walia asks, for transport, but fit for all these other 5 departments? Well, I think she has a point. I mean, if it is ill health, then labor, employment, general administration, these are very important portfolios. Okay, let's see what Gopal Rai has to say, because he's the man who's in the eye of the storm. He's the man who has the most serious answering to do. Earlier this afternoon, my colleague Ashok Singhal caught up with the former Delhi transport minister and asked him this question: how can you be fit for 5 departments and unfit for transport? You say you got a bullet lodged in your neck, but how can you be fit to run 5 other departments? This is what Gopal Rai had to say. This again is a newsroom exclusive. कोई मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम काफ़ी हैवी है. हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर ट्रांसपोर्ट अभी इलाज जब तक हमारा चल रहा है किसी और को दे दिया जाए तो बेहतर है. जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, उसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार पूरी भाजपा, सीबीआई, एसीबी मिलकर के अगर साबित कर दे तो मैं पूरे जिंदगी जेल में बिताने को तैयार हूँ. जिसके पास 50 से अधिक बसें हैं वो इस पॉलिसी में आ सकता है. टेंडर तो प्रक्रिया है ही नहीं इसमें. 20 से 25 विधायक हमारे साथ गए थे. दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपना काम कर रही है और वो करती रहेगी. तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, सरकार तो जब स्वास्थ्य ठीक होने के बाद डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे. That's Gopal Rai explaining his side of the story. He says he's given up transport because that's 60% of the work. The other departments are easier to handle, but as other guests say, it does raise a very serious sting. So what is this app-based bus aggregator service? And what is this company Shuttle that seems to have been favored, or at least that's what the Anti-Corruption Bureau of the Delhi Police believes? Shuttle is actually quite an exciting startup which is backed by some of the world's biggest private equity players. So sit back and watch this report that we've compiled explaining what Shuttle is, what their business model is, how these app-based aggregators work. In some senses, put very simply, it's like Uber or Ola for buses. Here's this report. Why did Delhi Minister Gopal Rai suddenly give up his transport portfolio? Did it have something to do with the firm Shuttle? First, let's tell you a little bit more about Shuttle. Shuttle is basically like an Uber for buses and was in the news recently when it raised $20 million from venture capitalists. The company claims to offer last-mile connectivity to commuters across 50 routes in the national capital with 500 buses on its platform. India Today visited the company's headquarters in Gurgaon to give the firm a chance to comment on the raging controversy. Founded by entrepreneurs Amit Singh and Dipanshu Malviya recently, Shuttle recently also ran into some trouble, with authorities suspending shuttle operations for allegedly violating rules and operating without permits, something the company has vehemently denied. The big question is,
did Minister Gopal Rai in any way favor shuttle? आप कारों के नंबर तय करते हो कि सड़क किस रूट पे कितनी चलेंगी, ये बस कार को रिप्लेस करेगी। हम सरकार में बैठ के लाइसेंसिंग, ये लाइसेंस राज का खात्मा है। Even before the premium bus service had been notified by the Delhi government, Shuttle had put out these detailed maps advertising the routes its fleet of buses would take. But the firm has vehemently denied any wrongdoing, saying the allegations have no standing and that its services are fully compliant with existing rules. But with the controversy set to intensify against Minister Rai in Delhi, what happens next is anyone's guess. It is not out of the blue that one of the most talked about startups, Shuttle, finds itself in the middle of a raging controversy that has hit the Aam Aadmi Party government. What is really out of blue is the selection of Shuttle for app-based premium bus services scheme, because the scheme was proposed by Delhi government, and government has yet not disclosed the criteria for selection of Shuttle. In Delhi, with camera person Satinder Bhati, Vivek Shukla for India Today. Now, there are several things that stand out. Firstly, there's a meeting that is called by the Transport Department. Professor Chinoy, all the other private companies raise objections or concerns about the policy that's being proposed. Only one company is okay with what is being suggested. The entire policy is geared to benefit that one particular company. Well, as you were saying, it's a fairly good competitor, but I think no, but it can't be only for one company, sir. See, the mistake they made, number one, was to use that emergency provision. Secondly, they probably thought that using the emergency provision, they could quickly go through the whole process. But the moment you choose one and the others opt out, then you're going to be subject to scrutiny. I don't think they thought that out fully. Kiran Walia, it comes down to the section 66, clause Parts 3, Clause M and N, which deals with emergency provisions under the Motor Vehicles Act of 1988. Where is the emergency? That by itself seems to have been a very, very inappropriate decision. However, you heard what Manish Sisodia says. He says we are trying to liberalize the transport sector. There's a mafia there, and the only way to deal with it is by opening up the sector. We used the clause we could. Does that in some senses show that they were very juvenile when it comes to administration? Kiran Walia? I think that it's such an accepted norm that there was no emergency, and secondly, it smacks of something which needs to be really probed. I agree with Mr. Kamal Mitra that it does raise eyebrows, and therefore the whole thing needs to be thoroughly probed, and whenever a doubt arises, especially a party which has come into power on a high moral ground and, you know, putting everybody behind prison but for themselves, really ought to first feel some sense of obligation towards themselves. There are standard norms, believe me, at the time of Commonwealth Games, when we needed ambulances so urgently, even then we went for tenders thrice, and that is to have at least 3 parties to apply for, and we know that these norms should not be violated. I'm going on record. So therefore, whatever be the emergency, there are clauses for emergency, and there was no emergency. I think that this party especially, or any party for that matter, is answerable to public. And, oh, absolutely. In the midst of all of this, there's also the Office of Profit controversy, which is refusing to die down. We saw the Aam Aadmi Party come out and say that the MLAs who'd been given the post of Parliamentary Secretary had no office, that they were just working out of their devotion and dedication for the people of Delhi, out of a sense of service. We went to the Delhi Vidhan Sabha, where we found that all the 21 AAP MLAs whose images you see on your screen right now, all of them have fairly swanky plush offices. The notification put out by the Delhi government says that these offices will be in the office of the minister. All the 7 ministers sit in the cabinet secretariat. These MLAs have their own offices in the Delhi Vidhan Sabha. The notification says that there will be no vehicle. The notification says that a vehicle will be provided for official work. The AAP government has been saying constantly that no, they have no vehicle that's provided to them. But the official notification put out by the AAP government says a vehicle will be provided. Take a look at how there's a big gap
between what the Aam Aadmi Party is saying about these 21 parliamentary secretaries and what the reality really shows. Meet Aam Aadmi Party ke interns. 21 Aam Aadmi Party MLAs appointed as parliamentary secretaries. But Arvind Kejriwal and his government claim that these 21 MLAs were equal to interns. In an affidavit submitted to the Election Commission on behalf of the 21 MLAs, Aam Aadmi Party legislator from Najafgarh, Kailash Gehlot, not only tried to pass the parliamentary secretaries as interns, but also claimed that all 21 MLAs did not have any dedicated office space. However, a reality check by India Today has exposed how the 21 Aam Aadmi Party MLAs had been given spacious, fully furnished offices at the Delhi Vidhan Sabha. In fact, Aam Aadmi Party's Alka Lamba had claimed that she had to beg the Speaker of the Assembly for space. विधानसभा का सत्र जब चलता है तो हर विधायक स्पीकर से कहकर कोई न कोई कमरा बैठने के लिए, अपने विमर्श के लिए मांग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन कमरों को संसदीय सचिव के तौर पर हमें दिया हो और हमने बहुत बड़ी मीटिंगें की हो। But her office at the Vidhan Sabha that has a plasma TV and plush furnishing tells a different tale. The government notification provided for space in the minister's office. But Aam Aadmi Party's parliamentary secretaries had individual offices of their own. The Aam Aadmi Party MLA's reply even says that the 21 parliamentary secretaries did not have exclusive responsibilities or functions assigned to them, contradicting what the Chief Minister himself had claimed on Tuesday. अगर फ्री में कोई एमएलए स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का, बिजली का, पानी का काम कर रहा है, मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? Arvind Kejriwal and his government have even denied that the 21 MLAs used government vehicles. पूरे देश में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और ये सारे पंजाब में एक एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, बंगला मिलता है, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है। हमारे वालों को धेला नहीं मिलता। However, the Delhi government's own notification says that government vehicles can be used for official purposes. Glaring discrepancies that need clarification. But the Delhi Chief Minister seems to be running away from tough questions. इतनी बढ़िया सरकार काम कर रही है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपको बदला लेना है मेरे से बदला ले लो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम चल रहा है उसको आप रोकने की कोशिश मत करो। शुक्रिया। As the showdown escalates, the fate of 21 Aam Aadmi Party MLAs still hangs in balance. Bureau Report, India Today. Our research desk sat and worked through what the status of parliamentary secretaries in other states is, because is everyone being unfair to the Aam Aadmi Party government by picking on the parliamentary secretaries that they've appointed? What's the status in other states? Let me take you through that one by one. I'll start with Punjab, which Kejriwal was speaking about. In Punjab, there are 19 parliamentary secretaries. The order has been challenged in court. So out of the 117 members in the assembly, 19 are parliamentary secretaries. It's about 16% in respect to the strength of the assembly. Then let's come to Haryana. In Haryana, there are 4 parliamentary secretaries. This order also has been challenged in court. That is about 4.4% of the total strength of the assembly. The strength of the assembly is 90. After that, let's come to Himachal Pradesh. In Himachal Pradesh, there are 9, which is about 13% of the total strength of the assembly. In Mizoram, there are 7, which is about 17% of the total strength of the assembly. In Goa, there aren't any because it's been quashed by the court in 2009. It's been quashed by the court in 2009. In Tamil Nadu also, there aren't any. Let's come to Rajasthan. In Rajasthan, there are 5 parliamentary secretaries, which is about 2.5%. Then there is Telangana. In Telangana, this order has been stayed by the High Court. There are 6 parliamentary secretaries, which is about 5% of the total strength. In West Bengal, there are 13. This got quashed by the High Court in June 2015, which again is about 5%. In Puducherry, there is 1 parliamentary secretary. So that's about 3.3% of the total strength. In Karnataka, there are 10 parliamentary secretaries. This order too has been challenged in court, which is about 4.46%. And then finally in Arunachal Pradesh, there are 4 parliamentary secretaries, which is about 6.6% of the total strength of the assembly. Whereas
in Delhi, there are 21 parliamentary secretaries. The strength of the assembly is 70, which works out to 30% of the strength of the assembly. You've made parliamentary secretaries. Is this a joke of sorts, Professor Chinnoy? Well, look, first I want to get into the legal point. Is this an office of profit, which an MLA cannot do? It isn't, because they're not getting a salary. No, but you're getting perks of office. You have a car for official purposes. You have an office. You said you didn't. You said you'll sit in the office of the minister. They're MLA, so if they have an office, that's not a big deal. It's an office assigned to him as parliamentary secretary, not as an MLA. But don't MLAs have offices? Some MLAs who are chairmen of particular committees have offices. All MLAs don't have their own offices, and these are fancy offices. It is obviously a lot, too much to have 21 out of. That's the point. No, because Kiran Walia, the fact is that in every single state, and I'll put that data out again for our viewers, wherever this is in court, it's been challenged in court, or it's been quashed by court. So parliamentary secretaries existing in the form that Kejriwal tried to make happen doesn't happen anywhere. Kejriwal says, look at Gujarat, look at Madhya Pradesh. It's either been challenged or it's been quashed. This is not okay. I would like to make very briefly 3 points which are extremely important. One is the background in which Mr. Kejriwal resorted to this kind of offering offices was to appease certain MLAs, and that was the time when Aam Aadmi Party had a huge cleavage with Mr. Yogendra Yadav, Mr. Prashant Bhushan and Mr. Anand Kumar getting out of the Aam Aadmi Party, and he was afraid that this may happen and this may lead to a whole boiling issue point. So therefore he tried to appease and gave them in a great hurry these kind of perks. And excuse me, the August 2015 notification, 13th August, categorically talks of office space and a car. So he's saying today is an outright lie. I'm sorry to say, it's so bad when the Chief Minister lies like this, that we have not given them anything. They have, now they are saying, because in the light of the criticism that's coming from public and from channels and media, therefore, Mr. Kejriwal saying today, when we had brought a bill in 2006, Delhi government, we brought it categorically as a money bill, got approved by the Lieutenant Governor and the central government. So you don't lie. Okay, I'm going to leave it there. I'm out of time. Kiran Walia, you made some important points. The fact is that the Office of Profit Bill has either been challenged or quashed in court elsewhere. The Delhi law doesn't allow it. That's very, very clear. Make no mistake. Once the EC calls these MLAs in July, once the process takes its own time, these MLAs will be disqualified. I have very solid information by highly placed sources that the legal case is untenable. It's been quashed in court elsewhere. They can challenge it in the Supreme Court like they're saying. We don't know what the Supreme Court will say, but purely on a point of technicality and legality, this will be quashed. There are likely to be assembly elections soon. There'll be big embarrassment for the AAP government. This is where I wrap up part 1 of this broadcast. We'll come back with